Hi, I'm Kunal Raginwar. तो was it a very interesting day? क्या लोगों ने लॉन्ग किया, स्टॉप लॉस हिट हुए? क्या लोगों ने शॉर्ट किया, वो भी स्टॉप लॉस हिट हुए? We'll have a look at what has happened today and what our system told us to do. After that, we'll have a look at what to expect for tomorrow. Before that, please share, like and subscribe to the channel if you want daily updates like this and for positional updates over the weekend. So now, welcome to the Game Changers. तो हमने कल बात की थी कि we want the market to break the 50 and 61.8% level like this, consolidate and then break out. ये consolidation तो आया ही नहीं. So this is not a valid entry setup. Simple. Now I'm going to clear this. For the short side, we said it has to break the day's low convincingly. मतलब क्या? ये convincingly टूटा, एक 3 minute pivot बनाया and then a breakdown. So this is definitely a valid setup. This is an entry point. This is your stop loss. And this was the target. Right? But what has actually happened is क्या ये टारगेट अचीव हुआ है? नहीं. बट ऐसे लोगों को लगेगा यार ये इतना यहाँ पे फेवर में गया तो यहाँ पे तो बुक कर लेना चाहिए. नो, वी फॉलो रूल्स. सो आवर रूल्स से इफ द टारगेट इज नॉट अचीव्ड वी विल ट्रेल आवर स्टॉप लॉसेस. ट्रेल आवर स्टॉप लॉसेस टू विच पॉइंट आफ्टर दिस शॉट, after this fall, is to this pivot high. So max to max, one should have got out at break even in this kind of setup. No losses should have been made here. On a day like today, no losses should have been made. Right? Is that simple? Now on an hourly chart, what we can expect for tomorrow? Like now we are getting into really tough times, because आर्ली में ये ऐसे लग रहा है कि ये ब्रेकडाउन हो सकता है यहाँ पे, बट ओवरऑल डेली पे डाउ थियरी ऐसी लग रही है कि बुलिश है. सो व्हाट डू वी डू ऑन एन आर्ली टाइम फ्रेम? इट इज नाउ बिलो द 50 मूविंग एवरेज प्राइस. तो हम क्या करेंगे is now we are going to reduce our risk for the trade. If to short, we need a convincing breakdown of today's low, a 3 minute pivot and then another breakdown. This would be a valid setup to short. For long, now I am quite confused here because ये overall मैं pullback को treat करूं या ये साइडवेज को ट्रीट करूं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक द रिट्रेसमेंट ऑफ टुडे एंड उसका 61.8 एंड 50% लेवल्स ये है. तो ऑन अ 3 minute चार्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वंस प्राइस ब्रेक्स द 50%, then it has to make a 3 minute pivot and another breakout. So only if this happens, and this should happen only after a gap up, then this will be a valid setup. Okay? I would take half risk here. On the short side, I will also take half risk because overall daily अगर हम charts देखें, अभी मैं ये सब clean करता हूँ so that the chart is clean. Daily में we are just in a sideways market. So it is tough for trading. If people are making losses, it is natural in this kind of market. What our system does is it helps to avoid a lot of these losses, like it has done today.
तो what should one do in such a sideways market? I feel one should reduce risk first and be a little bit more patient. कि अगर स्पेसिफिकली सेटअप्स आए तो ही ट्रेड करेंगे. वन शुड नॉट जंप इन एंड आउट ऑफ ट्रेड. ठीक है, इट हैपन्स. दिस इज अ फ्रस्ट्रेटिंग टाइम. दिस विल ऑल्सो गो एंड अ ट्रेंडिंग फेज विल कम सून, मे बी एज सून एज नेक्स्ट मंथ. ठीक है, चलो बाय, सी यू टुमारो.